करते साइड से ते कशाला चालू ठेवलं? Now see, first question, see what is the question, what was question. See, program for the implementation of linear queue. Then two files has been included. Both the files are required. stdio.h, that file is for printf scanf function, and for getch and clear screen function. conio.h, that is conio.h file is needed. Then after that, one statement I have written, hash define max 5. What is a hash define? Hash define is nothing but macro. Then what is the name of macro? Max. And which value we are storing in that 5. That means here I have defined macro max with a value 5. Then two variables I have declared in that. First one is front and second one is rear. Actually we had seen queue data structure. What is queue? It is a linear data structure in which insertion is done by using rear end and deletion is done by using front end. Such a data structure is called queue. And what is property of, that is what is the characteristic of queue? First in, first out. That is its principle. That means an element which is inserted first, that element has to remove first. Okay, मतलब first in first out principle पे वो queue data structure run हो जाता है. Then after that I have declared one array int a of max. Max is nothing but macro. Then if you use macro in an application, then that macro name will get replaced by its value. Okay, what is the name of macro? Max. तो max is the name of an macro. तो max को कौन सी value replace करेगी? 5 value. Okay. Max को क्या उसकी value replace करेगी? Max, that is the name of an macro, and that macro name will be replaced by its value. That means max will get replaced by its value 5. Then two functions I have declared here. First one is add, that is insertion, and second one is remove. Then after that main function I have written, and in that one function I have called, its name is ini, ini. देखो फंक्शन मैंने क्यू लिया है. एक्चुअली इफ यू इंसर्ट वन एलिमेंट इनटू द क्यू, हमने सपोज क्यू में एक एलिमेंट इंसर्ट किया, देन एक एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए हम रेयर को प्लस प्लस करते हैं, लेकिन फ्रंट को हम कब जीरो करेंगे? सपोज हमने एक एलिमेंट क्यू में ऐड किया है, कैसे किया है? रेयर प्लस प्लस एंड ए ऑफ रेयर इक्वल टू डेटा, ऐसे हमने लिया है. मतलब रेयर को तो प्लस प्लस किया, रेयर को तो हमने जीरो बनाया. But what is about front? What is the initial value of front? -1. वो तो -1 ही है. Then suppose if you insert one element into the queue and उसी एलिमेंट को आपको immediately remove करना है, उसको हमें क्या करना पड़ेगा? Immediately remove करना पड़ेगा. रिमूव करने के लिए हमारे पास कौन सा एंड है? फ्रंट. ऐड करने के लिए कौन सा एंड है? रेयर. Okay, by using rear end we can add the data into the queue. By using front end we can remove the data from the queue. But the value of initial value of front is -1. It is not a 0. It is -1. -1 का मीनिंग क्या? It is not pointing to the first element. वो फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट नहीं कर रहा है, वो -1 को पॉइंट कर रहा है. तो फर्स्ट एलिमेंट हम रिमूव नहीं कर सकते बिकॉज फ्रंट क्या है? -1. तो फर्स्ट एलिमेंट, इफ यू वांट टू रिमूव फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम ए क्यू, तो हमें फ्रंट की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी? 0. तो मैंने क्या किया है? फ्रंट के लिए, सिर्फ फ्रंट के लिए इनिशियलाइज करने के लिए here I have defined one function, its name is ini, and उस फंक्शन में क्या लिखा है मैंने? देखो उसमें एक ही स्टेटमेंट लिखा है, front equal to 0. It will be where it is, ये देखो इधर बीच में है. See the definition of front. अभी इधर नहीं, आपके देखना पड़ेगा ना, आपके नोटबुक में कहाँ लिखा है आपने. See the definition of front, in that only one statement is there, and what is it? Front equal to 0. Any problem? I स्टेटमेंट मैंने क्यों लिखा है? इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट मैंने क्यों लिखा है? बिकॉज आई हैव टू इनिशियलाइज फ्रंट बाय 0. मुझे फ्रंट को ना 0 से इनिशियलाइज करना पड़ेगा. तो मैंने क्या किया है और क्यों करना है? बिकॉज जब तक हम फ्रंट को 0 नहीं वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं,
तब तक हम क्यू में से डेटा डिलीट नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? समझ लेगा। फ्रंट को 0 क्यों बनाया? इफ द वैल्यू ऑफ फ्रंट इज नॉट 0 तो क्या होगा? वी कैन नॉट रिमूव द डेटा फ्रॉम द क्यू, हम डेटा रिमूव नहीं कर सकते, तो उसको 0 बनाया। ओके, द नेक्स्ट वन I have write menu here. Menu driven application is this is the menu driven application. Then for the creation of menu I have used here do while loop. Do while loop का application वही है, to create menu. Then से do लिखा है, bracket दिया है, what is option number 1? Insert. Then option number 2 remove, option number 3 display, and option number 4 exit. Okay, then after that one statement I have written, that means enter your choice. I'm accepting choice from a user in variable ch, then switch ch. वो choice को क्या किया है? switch किया है. If choice is 1, then which case will be executed? Case 1. ये colon है, this is colon, this is not a semicolon. Then case 1 उसमें क्या लिखा है? enter the data. Then that data I have accepted in variable data, and that data I am passing to the add function. कौन से फंक्शन को पास कर रहा हूं? add फंक्शन को. Now see the definition of add. तो add में क्या लिखा है? पहले if rear equal to max minus 1. See definition of add function. main के बाहर है. void add in bracket int data. Then whatever we are accepting from an user, we are passing it to the add function. कौन से फंक्शन को पास कर रहे हैं? add को. Then see first statement in add. If rear equal to max minus 1. What is the meaning of this statement? इस statement का meaning क्या है? Rear equal to max minus 1. What is the meaning of this statement? We are checking here. Yes. No. We are checking whether key is full or not. We are checking full, not empty. Okay. Okay, sir. Okay. Rear equal to max minus 1. What is the max? Size. If the value of rear is size minus 1, then what we can say? Key is full. Then suppose key is not full. Now key is not a full. Okay, it is empty. Then it will go into the else part. Then what is the first statement in else? Rear plus plus. What is the initial value of rear? Rear की initial value क्या है? अरे program -1. Okay. program क्या है? What is the initial value of rear? -1. तुम्ही झोपलेत करू नका बघा. The initial value of rear is -1. Then rear plus plus. Then -1 plus 1. It becomes 0. Then we are storing the data. A of rear. कोण आहे? साहेब बाहेर गेलेत का? मोबाईल इथे. A of rear. Okay, what is the initial value of rear? 0. A of rear equal to data. That means we are storing data at 0th location in array E. ठीक है? Any problem in this? Any problem in this? Any problem in add function? Hello? Any problem in add function? Online वाले? Any problem in add function? No, sir. Okay. Then see again, if your choice is 1, then again case 1 will be executed, and then again add function will get called. Suppose after inserting the data into the queue, suppose if you want to remove that data, then your choice must be case 2. Then in case 2 remove function I have called. Then see the definition of remove. देखो remove function पहले देखो क्या है? If the value of rear is -1 and if the value of front is -1, or if rear is -1 or front is -1, दोनों में से एक भी condition true है, then in this case which message we have to display? Key is empty. तो इसके लिए मैंने फ्रंट को पहले 0 करके रखा है. हम फ्रंट को 0 नहीं बनाते तो यहाँ कंडीशन ट्रू हो जाती, और क्यू में डेटा भी है तो भी मैसेज क्या मिलता? की इज एम्प्टी. ठीक है. देन नाउ द वैल्यू ऑफ फ्रंट इज 0. हमने फ्रंट को 0 बनाया. नाउ द वैल्यू ऑफ रियर इज मैक्स -1. कंसिडर करो मैक्स -1 है, हमने बहुत सारा डेटा उसमें ऐड किया है. देन क्यू इज एम्प्टी, दैट मैसेज विल बी डिस्प्लेड ऑन द आउटपुट विंडो. Suppose key is not full,
then queue is not an empty, then we can remove the data from that queue. So this rear equal to -1 or print equal to -1, that condition will be false. Then it will execute else part. Then what I have written in else part, print plus plus, ठीक है. Then return, ये print plus plus नहीं लिखा है, एक्चुअली वो रिमूव किया था. ऐसे लिखा था मैंने, रिटर्न ए ऑफ print plus plus. एक ही है ना स्टेटमेंट एल्स में, रिमूव कर. Return a of print plus plus, only one statement is there because print is 0. तो a of print मतलब कौन सा एलिमेंट रिमूव होगा, 0th पोजीशन का. print plus plus लिखा है, return a of print plus plus. what is this increment, this is post increment. तो कौन सा इंक्रीमेंट है, पोस्ट. तो पहले क्या रिमूव होगा, पहले क्या रिटर्न होगा, रिटर्न ए ऑफ print. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ print, 0. ए ऑफ 0 उस पोजीशन का एलिमेंट रिटर्न किया जाएगा एंड print को प्लस प्लस किया जाएगा, तो print क्या बन जाएगा, 1. ठीक है, इन दिस वे. देन सी डिस्प्ले फंक्शन, if your choice is 3, then display function I have written I equal to print, not 0, I equal to print. मतलब 0th पोजीशन का एलिमेंट आपने रिमूव किया है, तो कहां से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, फ्रंट से. आई इक्वल टू फ्रंट, जिस लोकेशन को फ्रंट पॉइंट कर रहा है उसी लोकेशन पे आपका फर्स्ट एलिमेंट रहेगा. तो आई इक्वल टू फ्रंट, आई लेस देन और इक्वल टू रियर. व्हाई रियर, because by using that end we are inserting the data, and I equal to front, why front, because by using that end we are removing the data. तो जहां से रिमूव कर रहे हो वहां से स्टार्ट करो, जहां तक एलिमेंट है वही रियर की वैल्यू रहेगी. तो क्या लिखा है, आई इक्वल टू फ्रंट, आई लेस देन रियर, आई प्लस प्लस, एंड डेटा को क्या किया है, डिस्प्ले. रीड दिस एप्लीकेशन, एक बार एप्लीकेशन रीड करो. इफ एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी. ऑल ऑफ यू हैव टू रीड इट. हे जे ऑफलाईनला येतात त्यांचे डॉक्युमेंट ते सर आणि मॅडम चेक करत नाहीत का अगोदरचे, नाही करत. मग विदाउट डॉक्युमेंट कसे काय बसतात, असेच का तुमच्या क्लासमधलेच आहेत का ते, जे आता आले होते बाहेर गेले ते तुमच्या क्लासमधले आहेत का. ऑल ऑफ यू टू रीड. एक्चुअली दिस इज क्रेडिट सिस्टम. आपका सिलेबस जो है वो है क्रेडिट. सो गवर्नमेंट इश्यूड वन गाइडलाइन कि स्टूडेंट को जैसे लर्न करना है वैसे वो कर सकते हैं. इफ दे वांट टू लर्न ऑफलाइन दे कैन अटेंड द लेक्चर्स. इफ दे वांट टू लर्न ऑनलाइन दे कैन अटेंड द लेक्चर्स ऑनलाइन. त्यामुळे ऑफलाइन ऑनलाइन चालतं. इफ यू वांट टू, मतलब आप यहाँ ऑफलाइन के लिए हो, 2 लेक्चर आपने ऑनलाइन के, 1 लेक्चर आपको ऑफलाइन करना है, एक्चुअली योर चॉइस. हम थोड़ी बोलेंगे इधर को, इधर बैठ, उधर जाओ, उधर मत, बाहर मत जाओ. लेकिन जो ऐसे सामने से चले जाते हम उनके प्रैक्टिकल के नोट सॉल्व नहीं करते. हमें भी पता है ना इसे. एंड एक्चुअली आई एम द क्लास टीचर ऑफ योर क्लास. तो आपकी केयर करना मेरा ही काम है. सभी को प्रोग्राम रीड करना है, करो जल्दी.
त्यापासून आम्ही मुलांना ऑब्झर्व करत असतो. आपण बॅग घेऊन जातो आणि त्याला परत वाटतं सांगायला काय जे काही लॉस होतो तो तुमचा होतो, त्या पॅरेंटचा पण होत नाही, आमचा होत नाही. ऍक्च्युली ईवायला कंपनी येतात ना, त्यानंतर डेटा स्ट्रक्चर आणि सी लँग्वेजचं विचारतात. कंपनी आती डीएस के बारे में पूछते हैं, पर डीएस बिकॉज इन डीएस एक्चुअली दे आर चेकिंग और लॉजिक, डीएस में आपका लॉजिक चेक करते हैं. सी लैंग्वेज में सपोज आपका लॉजिक आपको बिल्ड करना है, देन वन बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, पॉइंटर्स इन सी. और हम लोगों ने हमने पॉइंटर देखा ना तो हमें ऐसा लगता है अरे क्या है, बट एक्चुअली एवरीथिंग इज ऑन पॉइंटर. स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग करना है तो पॉइंटर ही चाहिए. विदाउट पॉइंटर क्या होगा, स्टैटिक में तो कोई भी करता है. और आप बोलोगे इतना डीएस के हर एक एप्लीकेशन आपको लेंदी मिलेगा, आप बोलोगे कि मुझे इसमें कैसे मुझे करना है. वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम बेसिक, बेसिक से करना पड़ेगा. लॉजिक डेवलप करने के लिए पीएचपी में आप देखते हो वेबसाइट डेवलपमेंट का, वेब डिजाइनिंग का रहता है. कॉमन फॉर्मेट इज देयर, वही है. एक बार हमने फॉर्म डिजाइन किया वैसे ही रहता है. या HTML5 में चले गए आप, बहुत सारे रेडीमेड टेम्पलेट्स मिलते हैं, आप उसमें चेंजेस भी कर सकते हो. रेडीमेड आपको टेम्पलेट्स मिलते हैं, कौन सी भी वेबसाइट आप डेवलप कर सकते हो. लेकिन ऐसा नहीं है, डेटा स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है. फॉर ईच एंड एवरीथिंग वी हैव टू राइट कोड. हर एक के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कोड लिखना पड़ेगा. एंड एक बार आप कोड लिखते हो तो आपको थिंक करना पड़ता है, वी हैव टू थिंक ऑन दैट, हाउ टू राइट दिस. सपोज आपके कंसेप्ट समझ में नहीं आता है, देन आपको क्या है, मतलब ये एक लेक्चर आपने किया, आपने ऐसे देखा है स्क्रीन को. सेकंड लेक्चर आपको करना है, सेकंड डे आप एब्सेंट हो या लेक्चर ने अटेंड किया, देन थर्ड डे सपोज आप आओगे. डीएस में सबसे ज्यादा बाउंसर डीएस में ही रहते हैं. आर प्रोग्रामिंग फिक्स है फॉर्मेट, इतना ही 4 लाइन का कोड रहता है. पीएचपी में तो कोड ही नहीं है, पीएचपी वही है, मतलब कुछ भी लिखा ना तो एरर नहीं आती है, चलता ही रहता है. सो वेरी सिंपल. क्लाइंट HTML में रहता है. CSS आपको, मुझे मालूम नहीं आपको CSS कितना आता है. देन CSS एंड सर्वर साइड पे PHP है. व्हाट इज दैट, इट इज अ वेरी सिंपल लैंग्वेज. एक ही बार फॉर्म आपने डिजाइन किया, रेडियो बटन कैसे बनाना है, टेक्स्ट बॉक्स कैसे बनाना है, एक बार समझ में आता है. PHP इज वेरी सिंपल. इधर नहीं है, इधर हार्ड कोडेड है, एवरीथिंग वी हैव टू राइट. सब कुछ हमें क्रिएट करना पड़ता है. और हमारा लॉजिक सपोज 4 है, सी के कॉन्सेप्ट सपोज हमारे क्लियर नहीं है, तो डीएस सिर्फ देखना पड़ेगा. तो बहुत मतलब हार्डवर्क करना पड़ेगा. एक्चुअली लॉजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. लॉजिक इंप्रूव हो जाता है, थिंकिंग लेवल इंप्रूव हो जाती है, बढ़ जाती है, देन एक्चुअली इट इज गुड. अभी तो एरे का ही चल रहा है ना, कि वे स्टैक है लेकिन एरे का ही चल रहा है. हमने अभी तक लिंक लिस्ट स्टार्ट नहीं किया है, डीएस का पार्ट आपने स्टार्ट नहीं किया है. इन डीएस देयर इज अ लिंक लिस्ट, देयर इज अ ग्राफ, देयर इज अ ट्री. तो बोलोगे वो कैसे होता है, आप देखो कैसे होता है. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इतना इंटरेस्टिंग है. सपोज आपके समझ में आता है, और समझ में नहीं आएगा ना, बोलोगे पॉइंटर क्या है, इसमें इसे बॉक्स क्यों दिखा है. हर जगह आपको पॉइंटर दिखाई देगा, अरे पॉइंटर, इधर भी पॉइंटर, उधर पॉइंटर, ये क्या है. एक्चुअली डेटा स्ट्रक्चर इज कंप्लीटली रनिंग ऑन डायनामिक मेमोरी एलोकेशन. और सब कुछ डीएमए के ऊपर ही है, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के ऊपर ही है, वही करना पड़ेगा. ओके, एनी डाउट इन दिस. इस प्रोग्राम में किसी को क्या डाउट है. हेलो, हैव यू रीड इट. तुम्हाला काय डाऊट आहे का. प्रोग्राम आहे का तुझ्याजवळ, तुझ्याकडे कुठे आहे. तू नोटबुक बॅग मध्ये का ठेवतो. म्हणजे याच्यावर त्याची एवढी काही ट्रस्ट नाहीये, ठेव जवळ, बघा त्याच्यामध्ये. घ्या एक एक्झाम्पल घ्या. राईट ए सी प्रोग्राम, राईट ए सी प्रोग्राम
Write a C program to accept to accept the characters or accept a string mana. Write a C program to accept a string from user, accept a string from user, comma, store it into the queue, store it into the queue and display it and display it and display it. Start. One string we have to take from a user, we have to store it into the queue. इसका मीनिंग क्या है? स्ट्रिंग एक्सेप्ट करो, लेन कैलकुलेट करो, एक 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 कैरेक्टर आपको ऐड करना है क्यू में, देन रिमूव फंक्शन क्या करेगा, उस क्यू में से एक एक कैरेक्टर को रिमूव करेगा और वो जो रिमूव हुआ कैरेक्टर है वो आपको क्या करना है, डिस्प्ले. स्टार्ट राइटिंग. आई एम चेकिंग योर लॉजिक, हाउ यू आर राइटिंग. स्ट्रिंग एक्सेप्ट करो, उसकी लेंथ कैलकुलेट करो, एक 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 कैरेक्टर क्यू में ऐड करो, सभी कैरेक्टर्स ऐड हो जाने के बाद व्हाट यू हैव टू डू, वी हैव टू रिमूव द कैरेक्टर्स. एक एक कैरेक्टर रिमूव करो, जो कैरेक्टर रिमूव होगा वही क्या करना है आपको, डिस्प्ले करना है. बराबर. कुछ तो आपको सोचना है. सेम एप्लीकेशन यू हैव टू राइट. मैंने अभी जो लिखे दिए आपको दैट इज फॉर इंटीजर. अभी मैं किसके लिए दे रहा हूं आपको, स्ट्रिंग के लिए. ठीक है, फर्स्ट यू हैव टू ट्राई, देन आई विल गिव डेमो. Same application you have to write. Suppose hash define max. Suppose its size is 5, 25. Then int and equal to -1, rear equal to -1. Then char str of max. Then void was insert. Then one character we have to pass at a time to that function. Then void remove.
Then suppose void initialization function, then void main, then variable declaration int ch, then n, suppose I, then clear screen, call initialization function first, then it will initialize print variable by 0, then create menu, yes, okay, and there is semicolon after the remove function, then create menu, do while, suppose printf slash n option 1 is insert, then printf option number 2, that is for remove. No need to write display function because after removing we are displaying that character, so no need to write display function. Printf slash n 3 for exit, yes, hello, screen is visible, is it visible? Yes, Yes, sir. okay, Yes, sir. okay. Then printf enter your choice, एक्चुअली एप्लीकेशन आपने सिंपल किया तो भी चलेगा, जाने दो, scanf %d %ch, that is your choice, then switch that choice, then case 1 that is for insert, printf slash n enter the string, then scanf %s ampersand name of character array is str, and then calculate length of that string n equal to strlen of str. And then after the length calculation, what we have to do, we have to pass all the characters to the push function, that is to the insert function. So set for loop for I equal to 0, I less than n, I plus plus, then pass the data character by character to the insert function, then insert this one, then at the end break. Means we are passing string character by character to the insert function. Then what insert function will do? It will add okay, it will add the data into the array. वो array हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा, ये जो स्ट्रिंग का array क्यू का array हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा, एक मिनट, क्यू ऑफ मैक्स, one more array we have to declare q, because in that we have to add the data. जैसे हम कैरेक्टर पास करें किसको, इंसर्ट फंक्शन को, देन इंसर्ट फंक्शन क्या करेगा, उसको क्यू में ऐड करेगा.
ठीक है, दैट इज इंसर्ट फंक्शन, देन वी हैव टू राइट रिमूव फंक्शन. क्या करना पड़ेगा रिमूव फंक्शन के लिए? व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्यू? व्हाट इज प्रॉपर्टी ऑफ क्यू? फीपो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. तो जो एलिमेंट हमने फर्स्ट ऐड किया है उसको यहाँ पे पहले रिमूव करना पड़ेगा. ओके, देन यहाँ क्या करना पड़ेगा? फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस, देन कैरेक्टर वेरिएबल. काही ते कॅरेक्टर नाही का? वन कॅरेक्टर व्हेरिएबल वी हॅव टू डिक्लेअर. सपोज कॅर सी. Then here c equal to remove function. Then remove function कैसे दिया है? Sorry, slide. Right here क्या रहा? Right here char. Change the return type of remove function. It must be char. Change the return type of remove function to char. Then after removing, we have to display print type %c c. Then case 3, that is for exit. Then while ch not equal to 3, get ch, end of main. जितने कैरेक्टर स्ट्रिंग में है, ऑल दैट कैरेक्टर्स वी आर इंसर्टिंग इनटू द क्यू. तो उतने ही बार आपको रिमूव फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा. रिमूव फंक्शन क्या करेगा? इट विल रिमूव ओनली वन कैरेक्टर एट अ टाइम. वो एट अ टाइम कितने कैरेक्टर रिमूव कर सकता है? एक ही. तो मैंने उसको लूप में कॉल किया है. लूप में क्यों? जितनी n की वैल्यू उतनी बार हम रिमूव फंक्शन को क्या कर रहे हैं? कॉल कर रहे हैं. तो उतने कैरेक्टर रिमूव होंगे और हम यहाँ मिलेंगे. ठीक है, और यहाँ आने के बाद एक एक कैरेक्टर हम क्या कर रहे हैं? प्रिंट कर रहे हैं. नाउ वी हैव टू राइट डेफिनेशन फॉर इंसर्ट फंक्शन और ini फंक्शन and remove. Okay, we can try. डेफिनेशन आप लिख सकते हो ना, जैसे कि जैसे दिया वैसे ही है. व्हाट इज द यूज ऑफ ini फंक्शन? इनिशियलाइजेशन. ini या सिर्फ फ्रंट को इनिशियलाइज किया जाता है. देन इंसर्ट फंक्शन, char डेटा. ओके, इंसर्ट करते समय हम क्या चेक करते हैं पहले? while inserting the data into the queue, what we have to check first? क्यू में डेटा इंसर्ट करना है ना, तो क्या चेक करेंगे पहले? हाँ, क्यू फुल है कि नहीं, वही चेक करना पड़ता है ना. हाँ, टेल मी कंडीशन फॉर फुल. बोला इफ where equal to max minus 1, that is size minus 1. Then what? The full. Printf q is full. If it is not full, then we can add the data into the queue. बोला कसं करणार मग? Where plus plus, then q of rear equal to data, that is character.
end of else, end of function. बघा बरं चेक करा, is it correct or not? Check it. Is it correct? Anyone? जो मैंने लिखा है, जो आपको दिखाई दे रहा है, insert function, check insert function whether it is, you have to tell me whether it is correct or wrong. It is correct. Anyone? कि इसमें ऐसा होना चाहिए, ये गलत है या गलत है? जो लिखा है वो सही है, सही है, ठीक. Okay, then tell me definition of remove function. Char remove. Then while removing the characters, which condition we have to check here? क्या कौन सी कंडीशन चेक करनी पड़ेगी रिमूव करने के लिए? -1 मतलब एम्प्टी की चेक करनी पड़ेगी. तो क्या लिखना पड़ेगा? rear इक्वल टू -1 और front इक्वल टू -1 ऐसे है. Then what is, which message you have to display here? काय डिस्प्ले करायचंय? queue is empty. We cannot remove the data from that queue. Then return. Then else. Else में क्या करोगे? बोल हाँ. Return, पहले return ना. Return queue of, बोला queue of front plus end of else, end of function. By using front end we can remove the data from the queue. तो queue of front, ये front की इनिशियल वैल्यू 0 रहेगी. देन queue of front मतलब फर्स्ट पोजीशन का कैरेक्टर रिटर्न होगा. तो front प्लस मतलब front क्या होगा? 1. देन 1 पोजीशन का. देन front क्या होगा? 2 पोजीशन का. ये चलता ही रहेगा. ठीक है, all of you read this program read करा. Read this application, read all the functions, read all the conditions. रीड करा म्हणजे पाठ करू नका, शांतपणे वाचा, समजावून घ्या. आपको याद रखना है, if the value of front is -1 then queue is empty. If the value of rear is max -1 queue is full. इतना तो याद रखना पड़ेगा, वही तो किया है. Interview choice, suppose option number is 1, then string is DPU, then option 2, then say output. है ना DPU output? कहाँ देख रहे हो? इंटरव्यूअर चॉइस मेनू के पर है, इंसर्ट के ऊपर. एनी प्रॉब्लम? अरे याद देखो मेनू के पहले, इंसर्ट के पहले. सेकंड मेनू जो डिस्प्ले हुआ है वहां लिखा है इंटरव्यूअर चॉइस इज टू, देन व्हिच फंक्शन आई हैव कॉल देयर? पॉप.
दैट इज रिमूव. देन रिमूव में क्या आया आउटपुट डीपीयू. जो स्ट्रिंग हमने इंटर की है वही स्ट्रिंग हमें क्या करनी है डिस्प्ले. बिकॉज क्यू कौन से प्रिंसिपल पे रन हो जाती है पीपो. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. तो पहले कौन सा कैरेक्टर इंसर्ट होगा डी वाला. तो डी इंसर्ट होगा देन पी इंसर्ट होगा देन यू इंसर्ट होगा. ठीक है. देन उसके बाद हमें क्या मिलेगा. रिमूव करते समय पहला कौन सा कैरेक्टर मिलेगा डी. बिकॉज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट डी देन पी एंड देन यू. वही आया देखो. अगेन सपोज choice is 3. Again I am executing this application. Suppose 1, then one string I am entering dy patil. Okay, then see if choice is 2, then it will remove the characters from that queue. So same output we will get 2. देखो dy patil. Any problem? 3. Then termination. सेम प्रोग्राम है कुछ भी चेंज नहीं. व्हाट इज क्यू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. linear data structure first in first out. What is stack first in last out. In tomorrow's lecture what we have to see circular queue. ये linear है ये circular queue. If you have any doubt then you can ask me. Give attendance द्या. तो अटेंडन्स घेते का. 3 कॉलम करायचे. 3 कॉलम. रोल नंबर ओल्ड रोल नंबर योर नेम एंड डॉक्यूमेंट सबमिटेड. डॉक्यूमेंट में क्या क्या है. वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दोनों डोज के टिक करना है आपको. सिर्फ आपने दिए तो आपको क्या करना है टिक. और कंसेंट लेटर तीनों दिया है तो आपको क्या करना है टिक करना है. नहीं दिया है जो नहीं दिया है वो लिखो. all of you put your roll number into the chat box and then you can leave the meeting. रोल नंबर नेम जो आपने डॉक्यूमेंट दिया है वो आपको क्या करना है सबमिटेड. जो नहीं दिया है वो आप मेंशन करो. आपको रोल नंबर नहीं है देन यू कैन राइट 999 एंड योर नेम. 3 times 99 लिखना है एंड आपका नाम लिखो. Okay, you can leave the meeting.